एक सेकंड. हाँ, I हमेशा stuck. कुछ ना कुछ होता है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है. But yeah, hello, hi, Hi. Hi hi. guys. I'm checking everyone in the chat is mad at us because we're stuck. इतना late नहीं हुआ. To be fair, this is Indian Standard Time, but ठीक है, नहीं हम लेट हो गए आज. But yeah, हाँ, the reason we are late is मैंने आज अपना setup change किया, like काफी time हो गया setup change किया, and this is the first time I am doing like all the controls on my stream, तो थोड़ा आज इधर उधर हो गया. But hello everyone, hello and welcome to episode 14 of DISHAHIN Talks. अभी ऐसे we have a number, so it feels Oh, weird. yeah. So yeah. Yeah, it's big enough for us to now start saying it on the stream. Okay. Yeah. 14 हो गए. Do you feel like we've done 14? I have no idea. I still feel कि किसी ने कुछ तो miscalculate किया होगा बीच में, या कुछ ऐसे. I don't know, but yeah, it feels nice. It feels, and it's been a while since we This is streamed. how we have So started our last 3 yeah, streams, talking about how long it it's has been और फिर हम गायब हो जाते हैं 2-3 हफ्तों के लिए. So yeah, इस बार कुछ yeah, बोलूंगी मैं. yeah. Fair. सही है. तो चैट में सभी को नमस्ते, सभी को हेलो. एंड हुमायूं भाई काफी टाइम से हमारे साथ हैं चैट में, तो हेलो हुमायूं भाई. Hi, एंड Mayu. हाँ, एंड हाँ बताओ यार, व्हाट्स बिन अप, क्या है आपके जीवन में, लाइफ अपडेट तो थोड़ा. This is a t-shirt I am very excited about and someone said Doughboy in the chat. तो मैं दिखा नाइस रही हूँ. नाइस. ये And then क्या रेफरेंस है, मैं थोड़ा ऐसे बूमर सवाल मुझे भी नहीं पता. पूछना. This is I just know that it's Ice Cube on the अच्छा, t-shirt. सही है. Will be सो really. you've got the drip, ऐसा Yeah. बच्चे कहते हैं आजकल, बट या कूल. सही है. एंड What have you been up to? आप बताओ. हाँ, I have been up to a lot of things, which is why ये stream इतनी डिले हुई है. Actually हर संडे हमारा एक ये होता है कि आज करना है, and then it's like आज नहीं करते, तो ये करते करते 3 हफ्ते हो गए. So I have started a new job, तो काफी वो सीन चल रहा था. Then I was traveling. I went to Ahmedabad, which is an interesting place to be in the summer. काफी गर्मी थी वहाँ. And yeah, now we are streaming. So yeah, fun. काफी एक्साइटमेंट. मतलब वही है ना कि पैंडेमिक में आप पूरे हमें टाइम घर पे बैठे रहते हो, देन योर लाइफ इज लाइक वेरी बोरिंग, एंड सडनली इट्स जस्ट लाइक 3 weeks जस्ट एक्साइटमेंट. तो काफी ऐसे I know. ओवर Yeah, that कॉम्पेंसेशन has वाला. been the pattern with my life also lately. बहुत ज़्यादा excitement and then suddenly there will be a stagnancy period. हाँ. Yeah. अभी तो फिलहाल I have an exam tomorrow, but Oh still, wow. you guys have to acknowledge the dedication that I have still come on the Yeah. life. Well, Yeah. आपको कौन सा एग्जाम है, like if you want to tell us. No, I don't want to give details on this. अच्छा ठीक है, Off fair. हाँ बताऊंगी. हाँ Yeah. I just हाँ. feel like people already know so many things. This is one हाँ. thing people don't know. fair. नहीं यार, ऑल द बेस्ट. आई होप आपने पढ़ाई की है, या अगर ये चिल एग्जाम है या पढ़ने वाला एग्जाम है, कैसा एग्जाम है. Chill exam है. हाँ फिर ठीक है. Yeah. बट हाँ. All online exams are chill exams. I hope no one from ओके, class is watching this. fair. So I Mhm. get the drift. Mhm. बट या आज काफी ऐसे, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही कि मॉर्बिड थोड़ा डिस्कशन होने वाला है. And I don't know why this topic came to my head, and I don't know why Disha agreed to do this, but here we are. आज ये देखते हैं कहाँ जाता है ये डिस्कशन. Yeah. तो No, I feel like this is the sort of stuff we would talk about anyways. Like yeah, just the two of us. Yeah. yeah. I have a feeling people will have very interesting things to say in the chat as well. Yeah, I want to see like what kind of plans people come up with, क्योंकि वही यार, ये वही है ना, like nobody knows when they're going to die, right? Okay, चलो let's dive into it. और उससे पहले जो भी 72 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 72 लोग देख रहे हैं चैट में, प्लीज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन इन. एंड आज हमारी चैट सब्सक्राइबर ओनली है, सो इफ यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर आई थिंक मोर देन 5 minutes, आप फिर कमेंट कर सकते हैं चैट पे. सो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा चैनल है, मतलब that's what I would say. दिशा, आप कहना चाहेंगे लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए? Yeah, please subscribe, guys. हाँ. Usually our chat goes very fast, but आज थोड़ी slow चल रही है. That is because a lot of y'all haven't subscribed, and I'm very unhappy to see that. So subscribe. हाँ. Yeah, so Cool. that you हाँ. can share your thoughts on this topic as well. Yeah.
एंड अपन सिंगल कह रहे हैं हेलो सुपर थंबनेल. हाँ, थंबनेल. I was so अगर upset. Why did Samraj put that thing on my face and not yours? He was indicating that I'm gonna die and you're going to witness. I said the exact same thing. उसने मेरे को भेजा दोपहर में thumbnail and I was like इसका एक opposite version भी बना के रखो because it no genuinely मैंने सोचा था कि कभी ऐसे horror movie recommendations करूंगा तो मैंने वो सारी photos खींच के रखी थी कि ऐसे मेरी आंखें दिख रही वगैरह. So he used it and it looks like that I am the mastermind and I'm the reason that you are disappearing. तो हाँ उसके 3-4 वर्जन बने थे but yeah this is the one that has gone live. Why wasn't I included in this? See मतलब we do a lot of things ऐसे तो मतलब ऐसे हो जाता है तो yeah but हाँ we will include you next time. So yeah, Thank you. which is like 5 weeks later जब हमारी release Very होगी. reminiscent of school. हाँ fair वो इसका क्या माइकल स्कॉट वाला वो जोक था ना I love inside jokes I would love to be a part of one someday. So yeah. Yeah. कूल. तो चलो आज हम आते हैं हमारे टॉपिक पे. तो पहले तो बताओ यार व्हाई डिड यू एग्री टू दिस टॉपिक. पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो भी जुड़ने चैट में कि द टॉपिक फॉर टुडे इज दैट इन 7 days यू आर गोइंग टू डाई एंड इन दीज 7 days व्हाट वुड यू डू. तो ये आज का हमारा टॉपिक है. तो पहले दिशा आप बताओ व्हाई डिड यू एग्री टू दिस टॉपिक. So lately I've been thinking a lot about, you know, how like living as if you're going to die tomorrow is a mindset that is preached a lot about. So Right. I've been thinking a lot about if that is a good way to live by. Like because I recently came across this other perspective where you live as if you are going to live forever. So yeah, do you get what I mean, right? नहीं तो थोड़ा और ये बताओ ना लाइक ओके सो वेयर वर यू ओरिजिनली एंड व्हाट इज योर करंट आउटलुक. So originally though I think I'm more leaning towards ki live as if you're going to live forever, because that means then I have to go to the gym and I have to study and I have to eat the healthy food and I have to do the whatever I have to do. But if I start living as if I'm going to die tomorrow, I'm not going to do any of those things. Right. But I feel like right now I'm thinking a good mix of both of those perspectives would be a great. So when you sent me that list of things, वो ये देख के मुझे याद आया. हाँ नहीं वो तो मैंने उसमें थोड़ा डेलिबरेट ये था. उसमें अराउंड 7-8 टॉपिक्स थे which were like हाँ ठीक है. Then I put the main one at the end की मतलब चलो देख. अच्छा, you were also excited for this topic only? हाँ because it's my way ना. See I had the title of the stream in mind before I sent you the topic तो वैसे होता. But नहीं, the reason why I was excited about it is because this is something I've actively thought about, and I don't subscribe to the thing you should live for 100 years, and because I don't know, I'm not okay with the idea of being dependent on someone when I get old. So वो एक थोड़ा है. But that how do you optimize life in a way that every second you're doing something, but that also leads to like a lot of added pressure on yourself that you feel ki, I'm not making the most out of the time that I have, which is what a lot of people felt in the pandemic कि यार घर पे बैठे कुछ नहीं कर रहे. तो आई थिंक उसके भी फ्लिप साइड्स हैं. तो आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि कहाँ क्या जाएंगे. तो what would be your first reaction if someone told you that you only have 7 days to live? I think I would find it honestly, like, we are going to make these elaborate plans further along कि ये करेंगे, but I feel like actual में अगर हो रहा होगा तो 7 दिन वो शॉक प्रोसेस करने में ही चले जाएंगे. नहीं जैसे वो होता है ना, very shocked. I wouldn't be able to like actually do anything. हाँ जैसे वो होता है ना 5 stages of grief होता है कि पहले आपका डिनाइल होगा, फिर डिनाइल के बाद क्या होता है, एंगर होगा, एंगर बार्गेन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ क्विकली यू कैन मूव टू एक्सेप्टेंस. सो वही था आई गेस. आई डोंट नो वेयर आई हैड हर्ड द स्टोरी, बट ये एक्चुअली एक है माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी में कहीं पे स्टोरी है कि देयर वाज समवन हु लाइक किसी को ऐसे मतलब श्राप दे दिया था कि तुम मर जाओगे 7 दिन में, एंड देन दैट पर्सन वाज लाइक कि यार अभी थोड़ा सैड हो गया बिकॉज वो भी मतलब किंग विंग था. उसने से सोचा था कि लाइक आई विल
do things, I will conquer other lands वगैरह. And then the person who gave the shrap said कि but look at the flip side, no one knows when they'll actually die, but you know that you are going to die in 7 days, so you can make the most of it. So I think that's something that has stuck in my mind. तो उस लिहाज से हम थोड़ा एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं स्पीड अप कर सकते हैं, and then we can move to the fun stuff. So what do you think of this perspective कि you actually have a timeline? I agree. I think that would help me live in a better way, but 7 days is too short. अगर starting से बता दे कि okay, you're going to die in like 15 years or 30 years. No, but then won't you be in the fear throughout कि 15 साल में हो जाएगा, 15 साल में like you'll be gone. Then from childhood itself you will be in the fear कि shit, I'm going to pop it at 15. So then you आप double जीने की कोशिश करते हो. No, I don't think. I mean, obviously the stages I'll go through of all the stages that you mentioned. But I think then after that is done, I'll have enough time to actually live. I don't know. Maybe this might not work, because if you think of this from like a very practical example, would be you know how like you have to submit assignments and stuff, and there's a deadline. I never, even though they give you the project like a lot of time in advance, you always end up doing it a day before. So what if I do that with this also? Right. Yeah, Fair enough. matlab, but is this something the like you procrastinate things which you don't actually care about, right? But this is like you will stop existing if this happens. So like I'm very lazy like that, maybe. हाँ वो भी है. No, because वही होता है ना, हाँ, like all these manic pixie dream girl characters जो होते हैं जिनको ऐसे deadline दी होती है कि कैंसर हो गया, now that person is going to pop it, तो उनका वही cycle बन जाता है ना लाइफ का कि like I'll be happy all the time and I will do everything, all cute things I will do. तो मैं उस perspective से सोचा था like can you become a person like that? I think I can do it, and for that very reason I would like to know when I'm going to die. I know that a lot of people don't want to know, but I would like to know. Would you like to know? Yeah, I would definitely like to know. फिर मैं मतलब अपना then I can like I just want to prioritize the things that I have to focus on and cut out the bullshit. That's what I'm going to use these 7 days for. जैसे मैं बचपन में जब मैं इसके बारे में सोचा था, then I used to think कि I want to travel and see like the entire world in 7 days, like all the main things that I have to see, I will see. But the flaw in that plan is that if you only travel for 7 days, you are seeing that particular site only for like 5 minutes. But आपका maximum time जाएगा flight में, train में, इसमें. तो and that's the shitty way to like spend your time. तो I think वही आपको optimize करना पड़ेगा कि okay मेरे पास 7 दिन है, 7 into 24 कितना होता है, जितना भी होता है उतने घंटे हैं. How do you make the most of it? Reminding me of that film जिसमें it's not an Anil Kapoor film, some film जिसमें वो he discovers a book that shows the picture and the date this person is going to die on. Anil Kapoor? Not Anil Kapoor. Okay. But a South Indian actor that looks like him, and he has a lot of fun with this, I think. And but one day his like mom's picture pops up. अच्छा. Yeah. Okay. ये कोई फिल्म बताया चैट में तो प्लीज बताओ यार. ये टीवी पे बहुत आती थी, so I'm pretty sure. I think this is, I know which movie this is, but yeah, I would like to know. Confirm कर दो चैट में कि कौन सी फिल्म है. But yeah, नहीं, this is a lot like Death Note. Death Note का version. Yeah. Cool. तो हाँ, sorry, आप कह रहे थे कुछ? Yeah, there's a huge okay. Rohan is saying hi guys, glad you're back. Wow, nice. Hello Rohan. Hi. हाँ तकदीर वाला is the movie. How can I forget तकदीर वाला यार? तकदीर वाला में वो होता है ना, यमराज आके आइसक्रीम खाता है धरती पे. that's so fun movie. But yeah, the actor's name is Venkatesh. Yes, Naman Singh. You're right. Victory Venkatesh. Yes. Yeah. तो चलो, let's assume for the sake of our argument कि you are already at acceptance and your 7 days start now. तो आप क्या करोगे? Like what are the things that you have on your mind?
Okay. And like, so I did not think about this question in advance. So I'm thinking about stuff on the spot so ठीक that है. it's as authentic as it, I'm हाँ trying to sell it as that. It was just ठीक this. है ठीक है. हाँ. I would probably call up everyone that I'm close to and tell them I love them, because I'm not the type of person who like verbally communicates love. My love language is acts of service. So that would be my starting point. You go. Let's say one thing so that I have time to think. नाइस. Yeah. हाँ, फेयर फेयर. हाँ, ये वाला मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज पता नहीं यार, मेरा लव लैंग्वेज क्या है. मेरा लव लैंग्वेज क्या क्या होता है लव लैंग्वेजेस. एक तो सर्विस होता है, एक वर्ड्स ऑफ विजडम नहीं, क्या Words होता of है, affirmation. वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन होता है, एक फिजिकल वो होता है, एक गिफ्ट होता है. हाँ हाँ, आई एम मोर ऑफ अ गिफ्टिंग पर्सन, सो लाइक दैट्स द वे आई कम्युनिकेट. बट The हाँ, ये acts of हाँ service. हाँ, एक्ट ऑफ सर्विस वाला वो है. तो हाँ हाँ, दैट्स फेयर, करना चाहिए. बट मैंने कुछ बहुत ही ऐसे सेल्फिश सोचा था. सो देयर इज दिस थिंग दैट आई वांट टू डू, व्हिच इज, मुझे वर्ल्ड नहीं घूमना है, मुझे सिर्फ इंडिया घूमना है. एंड इंडिया घूमना ओनली फ्रॉम अ फूड पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ताजमहल नहीं देखना, मुझे कुतुब मीनार नहीं देखना, मुझे सिर्फ खाना खाना है. एंड दिस इज माई गोल कि मैं 1 साल लूंगा अपने लाइफ का, सिर्फ इंडिया घूमूंगा, हर एक स्टेट जाऊंगा, हर एक जगह जाऊंगा, जो भी बेस्ट खाना है वहाँ का. हाँ, ये मैं एक, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, 1 साल का मेरा ओरिजिनल प्लान है कि मैं वो करूंगा. आई विल गो टू एवरी प्लेस, हैव द बेस्ट फूड एंड जस्ट लर्न द लैंग्वेज ऑफ दैट पार्ट. तो 7 days में हम इसको कंडेंस करेंगे. तो इसमें क्या होगा कि द फर्स्ट 3 days विल बी डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, and the last 4 days will be going back to the things that I really like. जैसे I really like gulab jamun, let's say, for example. So I will go and find the best place which has gulab jamun, and I will have that gulab. So I will, the last 4 days are comfort food. The first 3 days are discovering new things. Like, what if this becomes my comfort food for the last 4 days? तो वो ये प्रोसेस है मेरा. इसमें भी वही, मैंने अभी वो सब कैलकुलेट नहीं किया है कि ट्रैवल वगैरह में कितना टाइम वेस्ट होगा. एंड देयर इज आल्सो दिस थिंग कि अगर इफ आई डिस्कवर समथिंग न्यू and I don't like it, it means I have ended, wasting that much time. So should I be thinking about wastage, or should I just like fuck it and move in? ये तो सब सोचने में ही टाइम निकल जाएगा. हाँ हाँ, तो वही आज की पूरी स्ट्रीम हम बहुत ओवर थिंकिंग करने Yeah, we वाले. are making the plan in advance so that if हाँ we are ever caught in this situation. हाँ. But yeah, no, I agree with that. I think I wouldn't want to spend time on discovering things, because with regards to food, I'm not a very adventurous person. और मुझे एक चीज पसंद आ गई तो I will eat that until I absolutely can't eat it anymore. So for that reason, I will have to go to Delhi, because Delhi has a lot of my favorite food. Interesting. And yeah, a lot of it is in Bombay itself, and I think in Tarkari there's this restaurant. But yeah, Nice. हाँ, ये अच्छा है कि like you only go back to the places which you are confident about, so then you won't be let down, or like pretty much you won't be like you're not taking any chances. That's a good strategy as well. सही है. yeah. Cool. And there's any not really anything food wise that I haven't tried and I want to try before I die. Do you have any मतलब ऐसे कुछ आपने सोच के रखा है? नहीं है, इसलिए. अच्छा, cool. बट लाइक ऐसे कभी तो ऐसे सोचा होगा ना कि लाइक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में क्या मिलता है? Oh yeah, but टाइम बहुत लगेगा. हाँ, वो भी है. इंडिया में नहीं है ना कोई? इंडिया में कोई है क्या कोई मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट? प्लीज बताओ. I just want to go to a Michelin star, any Michelin star restaurant and see कि like what's the hype about, कि मतलब इतना अच्छा कैसे खाना मिलता है वहाँ पे. तो जैसे अगर रैटेटुई वाला रेस्टोरेंट रियल में होता तो मैं पक्का जाता वहाँ पे. like I would want to eat. Oh, in that sense, I've just such deep cravings because I've watched so much anime and stuff. Maybe I would like to go to Japan, but बहुत time निकल जाएगा. हाँ, जापान तो But जाएंगे. one thing I will say, I will live stream every day. Yeah, I was going to come to this. Okay, so will you live stream every day? Every single day, yeah. And I'll probably stay as I'll try to go live on Insta and stuff. I want to record the whole thing. But okay, तो what is your end goal from the streaming? मतलब अभी हम stream कर रहे हैं किसी एक purpose के लिए, right? कि जैसे you want to connect with people, you want to create your own persona on the internet, but when you only have 7 days to live, what is it that you are streaming towards?
I don't know. The DISHAHIN talks and like streaming on this channel in general has become such a comfort space because मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि people genuinely just come to watch us talk, and most of the people watching us aren't our friends. Like Right. there is no reason why they would put in time to hear us watch. So I feel like these are the people that would genuinely be interested in knowing what I did with my last 7 days, and yeah, they deserve access. Nobody else does. Nice. Yeah, that's a really nice perspective. And एक चीज जो मैंने realize की है last जितने भी times हम stream कर रहे हैं कि is throughout your life you feel कि जो भी आपके साथ हुआ है it's like very specific to you only, like nobody else would get what you have gone through. But in the past 2 years I've realized कि बहुत common experiences हैं यार लोगों के, मतलब maybe the specific details of it are different, but more or less like all the people that we kind of connect to have had similar lives. So it's also the interesting कि आप जब ये करोगे अपना 7 days वाला, तो the choices that you are making and the choices as an audience they would be making would be like pretty much similar. So I think वो काफी ट्रूमन शो वाला फील आएगा उसमें. Would you stream 24 hours though, like एकदम मतलब No, all the not hours? not 24 hours, but हाँ, at तो least like you at would. night I will come and give a 15-minute update कि आज मैंने ये किया. Ah, Yeah. right. Or maybe Yeah. I'll just hire someone to make a documentary of the 7 days. हाँ, ये तो मैंने भी सोच रखा है कि मैं हायर नहीं करूंगा, मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि आई हैव अ फीलिंग कि बाय द टाइम if my filmmaking career does not work out, so this will be like my magnum opus जो होता है ना कि आई एम गिविंग माई लाइफ टू दिस फिल्म, लिटरली गिविंग माई लाइफ टू दिस फिल्म. तो मैं बना के रख दूंगा इसको और मैं विल में लिख दूंगा इसको कैसे एडिट करना है, क्या करना है, सारे में इंस्ट्रक्शंस डाल दूंगा. एंड देन once I pop it, like जितना भी time लगता है post में, then you send it like for all festivals and shit. And it has a great story as well कि मतलब PR में बहुत help मिलेगी इसको. Then here is a guy who is dying on camera and ये आपको footage मिल रहा है. So I think Oscar तो मिलेगा पक्का. तो yeah, I will sell the rights before I die. And everyone is allowed to milk my death at least. Like text everyone like at job and whatnot. Disha passed away. So yeah. Mm-hmm. Yeah. Would you stream like your last words? कि अगर आपने मतलब maybe I'll probably say something stupid. I don't. Yeah. I don't think so. Sometimes I feel that people have like too much pressure coming up with good last words. कि like there are these lot of famous people like Abraham Lincoln वगैरह, सबका आप पढ़ते हो कि last words ऐसे कुछ profound बोल के गए थे. And I was like, यार, when you're on your deathbed you don't have any control on your bodily functions, mental functions. आप कैसे सोचोगे कि कुछ profound ऐसे बोल के जाते कि then sometimes I just think people make it up to make the person seem nice. Yeah. हाँ, वो मतलब वो है like you. I think because I don't think anyone can form coherent sentences. Yeah. On the deathbed. Yeah. कि मतलब वही होता ना, पुराने एंसेस्ट्रल फैमिलीज में दिखाते थे कि ऐसे दादाजी ये हो रहे हैं, फिर सब पूछते तिजोरी की चाबी का है, बताओ. तो वो वाला ये हो जाता है. Oh yeah, I would also spend all my money. I mean, I don't have a lot, but yeah, I'm not leaving anything behind for anyone. हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. I want क्या कहते हैं, अगर मेरे हुए बच्चे तो I would want them कि कमाओ अपने इस पे. बट हाँ, मैं बेसिक एक रख दूंगा. I won't tell them where I've. Thinking of this from a very like अभी ये age में. हाँ, fair. Person perspective. अच्छा, हाँ, ठीक है, fuck it. Then I will tell you. If you have a whole family and all, like obviously like our own family, तो it complicates the situation. No. फिर तो मतलब बागबान हो जाएगा थोड़ा कि मतलब then you have too much opposition to like all kinds of things that you think of. Can we take a second to address like the chat, because I feel like okay. Cool. Darshil is in the chat. Hello Darshil. Technically our brains can't predict the sorry. Yeah. Satyajit keh rahe would get off social media right away if I were to die in 7 days. ये भी interesting thought है. Would I do that? No. I mean, I know a lot of people who've passed away and their Instagram accounts are still active, and I like going back and whenever I think of them, like. नहीं, मतलब he's not saying that you will delete
the thing. Okay. He's just saying कि you won't be active on like that's what I'm assuming. Acha, yeah. हाँ. No, I was saying that from the ye ki thinking ki oh, I want to put up as many posts as possible. There's a lot of art that I'm just sitting on. I would probably release all of it together. Yeah, हाँ, ये तो मैंने भी सोचा था कि I think if I only have 7 days and like I would be free of the fact that I need validation from people. That is something that I would completely let myself go free of. तो मैं एक ऑडिटोरियम बुक करूंगा 3 घंटे के लिए एंड मैं अपने लाइफ का सब बोल दूंगा कि लाइक ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सारी बड़ास निकाल दूंगा मैं. एंड कोई आए ना आए, आई डोंट गिव अ शिट. मैं दिस इज जस्ट फॉर मी. लोग आए तो अच्छा है, लाइक इट विल बी गुड फॉर द इवेंचुअल. Definitely people will show up. हाँ, it will be good for the eventual documentary जो भी बनेगी. So like I'll get some good footage. But even if no one shows up, that's even better footage because that's better for the documentary. तो वो भी है. Why? Okay. हाँ, see ऐसे बिकता है. I read something on Twitter the other day. It's called weaponized victimhood. And this is something that a lot of people on Twitter, that why people on Twitter behave the way they do. And इसका basic answer ये है कि जब आपके साथ कुछ ऐसे negative experience हो जाता है तो that becomes like your shield, that this is what I'm going to attack everyone with. And then it becomes a game of कि my victimhood is bigger than your victimhood, which is what happens on Twitter. तो मतलब वही है ये. I don't know where this came from. It just like I said, 2 और 2 5 हो गया. But yeah, I hope there was a point. Very different side of Twitter, but yeah. नहीं यार, ट्विटर पे तो बहुत अजीब अजीब चीजें होती है. But yeah, now I use Twitter only for cat videos, which is quite helpful. But yeah, I would get a pet. I would get a pet only for 7 days. And then like so far I haven't been getting a pet because my mom says that I wouldn't be able to deal with its death. Now I don't have to worry about that. They'll have to worry about it's the pet's problem. Yeah. Oh my god. Yeah. And I would definitely like give access to all my accounts to my friends so that they can keep posting after my death, just to scope people out. हाँ, but I was just going to ask, like, isn't that creepy कि मतलब ऐसे suddenly post आ रहा है? Because I won't name a celebrity. There is a certain person, Indian person, who passed away, and that person's account was being managed by someone from their team. And like a few months after they passed away, someone tweeted something from that account, and everyone was like, "Wait, क्या हो रहा है?" So yeah. But again, you just have 7 days. I don't think you give a shit about. Yeah, who cares? Yeah. I feel like this is what Kanye lives like. You know what would be even better? कि मतलब जिन जिन लोगों के साथ आपके पंगे हैं ना, आप schedule करके जाओ post. कि oh my god, I was gonna get to that. Yeah. आप schedule करके जाओ कि मतलब so and so person, you bullied me in first standard and now I'm dead. So jokes on you. Some shit like that. Some evil fuck all shit like that. You schedule and go. And yeah, that would 13 reasons why. Yeah. Oh yeah, shit. 13 reasons why यही तो था. Nice. 13 reasons why. Shit, मतलब उसका भी एक मतलब सीक्वल बना सकते हैं. मतलब अभी एक डॉक्यूमेंट्री is about you dying. Second part is the shit that you did after your death. So, you're long gone, but there are lives that are being destroyed. Yeah, full matlab. I would destroy some lives. I have so much information that I just people can get sued over it. Yeah, death cinematic. I have been making this so exciting. This can't be. Fair. ठीक है. Somber. नहीं यार, ठीक है. You know what? I think there is a whole stigma about things. You know, when you pass away, everything should be sad, and people like one of the things I have a problem with, especially like when a celebrity passes away, is that even if someone tries to make a joke or something, it's not that they're being disrespectful towards that person. It's just that maybe that's their defense mechanism. कि मतलब कुछ लोग होते हैं कि let's say you're not very close to someone and it's like some celebrity, and to become comfortable with that news, you're making some joke in your head. Now, are you being disrespectful to that person, or are you just like that's your problem? तो उस चीज से मुझे problem है कि like why do funerals or like death has to be sad always? तो वही, as long as you're not disrespectful
and it's fine. Yeah, I realize I'm treading on very dangerous territory, so I will Yeah. quickly reel myself back in. But yeah, I like, I would want like my funeral to be like happy. Not happy in the sense कि चलो गया अभी, but happy in the sense कि like, hey, this was a No, nice person. I want people to be distraught. हाँ, Yeah. that's the thing, na? Like people appreciate you only after you have died, and then you're not there to see it. Like, what's the point? पहले बोल देते थोड़ा तो खुशी होती, but I guess that's how life works. But yeah, do you think it is possible to then employ that attitude like in our normal lives where we are not going to die in 7 days? In what sense? Ki In the sense ki, okay, maybe we should just start being more honest and like going after things we want to go after and not giving so much of fuck. definitely. Like sometimes, like it's not always possible to live like you don't Like give a that. fuck, Mm-hmm. because there are a certain number of fucks that you have to eventually give. तो वो आपको तो rationalize करना ही पड़ेगा. But the goal of life eventually is to not give a fuck and do the things that you actually want to do. तो वही है. Sometimes I even feel that like, is happiness overrated? Like, is no, ऐसे मतलब ये टाइटल नहीं है वीडियो का, मैं जस्ट ऐसे ही कभी सोच रहा था कि हमें हमेशा बोला जाता है कि you have to be happy, you have to be happy, you have to be happy, but what if being happy is like not the natural state of being? It is जैसे not. yeah. I think happiness is very overrated and it's such a fleeting feeling. I think chasing it is a recipe for disaster. But then if you're not chasing happiness, then like what is the purpose of life? You have to chase something always. हमें हम यही तो स्क्रिप्ट देते हैं ना हमको कि मतलब there should be like something I that you think look keeping forward to. good pace, like the in general state of peace, would be far better. हाँ, तो मतलब then you're not chasing happiness, you're chasing peace. So like peace with what? Like peace with just like being Everything, the yourself. way things are and the way you are. अच्छा वैसे, so like you are becoming comfortable with yourself. That's the whole You're idea. accepting yourself in the way things are. Yeah. Fair. But हाँ फिर उसमें मसाला नहीं रहेगा लाइफ में. Yeah, then we'll become there won't be much content to write about. हाँ मतलब वही होता है ना कि this जैसा is our toxic trait. We cling on to these behaviors because we think we'll lose our spice, the spice our personalities. हाँ मतलब वही होता है ना, like even in movies if you see that someone, जैसे एक कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर कहता है कि मुझे बैंगन पसंद नहीं है, जिंदगी में बैंगन नहीं खाऊंगा, एंड द नेक्स्ट 2 hours will be on how this person has to eat बैंगन because his life depends on it. This is what movies have taught us. So the point where he becomes comfortable with himself and with themselves and eats बैंगन, वहां पे तो खत्म हो गया ना, वहां पे मूवी खत्म हो जाती है, एंड क्रेडिट्स आ जाते हैं. तो मतलब लाइफ डजंट वर्क दैट वे. तो हाँ, आई थिंक वो थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू बिकम लाइक, उसके बाद अगली जर्नी क्या है, और इवन लाइक डज देयर इवन हैव टू बी अ जर्नी, बिकॉज why this is something that I have kind of struggled with, that let's say there's something X that I want to accomplish, and the day I accomplish that I kind of feel weird कि यार ये हो गया, अभी बहुत अजीब लग रहा है. लाइक मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप व्हिच इज व्हाट वी आर स्ट्रीमिंग आउट ऑफ टुडे, and it took me a very long time to buy it. Like I was saving for this for the past 2.5 years, and abhi bhi like I haven't completed the full amount, but like abhi EMI chal raha hai mera, touch wood. तो वो है. But there was this weird moment where I was like at the क्रोमा का काउंटर एंड मैं अपना कार्ड लेके खड़ा था, एंड I was just feeling damn weird कि because I had built this up in my head so much कि MacBook खरीदना है, MacBook खरीदना है, MacBook खरीदना है, and when it was finally happening I was like यार कुछ तो गलत हो रहा है यार, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता, ये मतलब it wasn't as satisfying no, as you thought it would be. yeah, no, it's not that it wasn't as satisfying, it just felt weird. I don't know how to put like a finger on it, but it felt weird कि how you build up something in your head ki this will be a really big milestone in your life, and when it actually happens it just feels हाँ ठीक है, क्या और क्या करना है अभी. So now yeah, and now I'm feeling कि यार अब इससे बड़ा मैं और क्या milestone अभी बनाऊं, because my whole life has been like
ओके 10th पास करो ठीक है, 12th करो ठीक है, कॉलेज करो ठीक है, मैकबुक खरीदना है ठीक है, फिल्म बनानी है ठीक है, तो वही चल रहा है यार अभी सर्कल. तो which is why I asked you ki isn't like the purpose of life chasing happiness. It isn't. Yeah. Mm-hmm. So This yeah. is going into off street. Okay, we'll talk about this. Yeah, but people are saying a lot of things about like the happiness and trust thing we were talking about. Yeah. नमन नारायण सिंह कह रहे हैं हैप्पीनेस इज अ रिलेटिव फॉर सम, सर्वाइवल इज हैप्पीनेस. हाँ फेयर. हाँ ये तो काफी मतलब कमिंग फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये तो डेफिनेटली ये है. बट हाँ ठीक है, सबकी स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में एंड वी आर नॉट डिस्क्रेडिटिंग एनीवन स्ट्रगल्स. तो हम जस्ट हमारी पोजीशन पे हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना. सो दिलजीत कह रहे हैं कोल्ड फीट बिफोर मेकिंग अ बिग पंच. डूड ये मतलब इतना सिनेमैटिक मोमेंट है ना, ये मैं कभी यूज करूंगा अपनी फिल्म में. बट सो आई वेंट वेरी अर्ली टू द शॉप एंड इट वाज लाइक 9:30 ish. And उस time पे the entire shop isn't open. Like there are some people who are like still setting up. There are some people who are like the salesman वगैरह. तो हर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में एक हडल करते हैं वो लोग सुबह, where they talk about कि आज ये बेचना है, आज ये करना है, जनरल मोटिवेशनल स्टफ फॉर लाइक सेल्समैन वगैरह. तो वो चल रहा था और मैं वो काउंटर पे खड़ा था एंड दे डिड अ स्मॉल प्रेयर व्हाइल लाइक आई वाज एट द काउंटर, नॉट फॉर मी, फॉर देमसेल्व्स. एंड वो लोग वो या एक वो गाना नहीं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो लोग सब गा रहे थे. एंड दिस वाज माय स्कूल प्रेयर आल्सो कि मतलब तो एक मतलब वो एसोसिएशन भी है. सो व्हेन आई वाज फीलिंग वियर्ड देयर वाज दिस म्यूजिक आल्सो गोइंग ऑन. सो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस मोमेंट, बट ये है, इसमें कुछ तो बात है इस सीन में. तो ये मैं कहीं कहीं ना कहीं यूज करूंगा. या कूल. हाँ बट ये तो होता है एंड देयर इज दिस वेरी अदर, सॉरी मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ. सो आई थिंक आई एम गोइंग टू लेट यू स्पीक फॉर द नेक्स्ट 15 minutes. बट मैं एक बहुत और छोटी चीज ऐड कर देता हूँ चेजिंग हैप्पीनेस वाली चीज पे कि देयर इज दिस थिंग व्हिच हैपेंस सबकॉन्शियसली इन माय लाइफ कि व्हेनेवर इट्स अ बिग डे फॉर मी कि मतलब आज मैंने कुछ अचीव किया है, उस दिन मेरी माँ परवल की सब्जी बनाती. आई डोंट नो हाउ, इसका क्या कनेक्शन है, कॉस्मिक कोरिलेशन है, बट ये You होता है. don't like that vegetable. आई हेट इट, आई एब्सोल्युटली हेट इट. नाम से पता, I don't even know what it is, but it does not. I wouldn't trust that vegetable. Yeah. आई हेट इट एंड मैंने बोला भी उनको कि यार मत बनाया करो, मतलब दिस एज योर ओनली सन, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू, परवल मत बनाओ. बट ये होता है लाइक आई रिमेम्बर मेरे को 10th में 95% आया था एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि लाइक चलो बिना पढ़े 95% आ गया एंड देन कट टू कट पे परवल बनना एंड लाइक ओ मैन क्या करूं. एंड दिस हैज हैपेंड अ लॉट. तो या एनीवे ये मैं अपने थेरेपिस्ट को भी बताऊंगा बाद में कि परवल से मुझे प्रॉब्लम है. बट या point being, you have to chase happiness. Streams? Absolutely not. She has no idea what I do. So yeah. Cool. Okay, now great. The floor is all yours. आप अपना प्लान बताइए कि 7 दिनों में आप क्या करेंगे. I'm trying to think of more things. As I said, I feel like lately I've been thinking ki ever since I'm very committed to like being the bigger person and letting go of stuff. But I will be destroying some lives. I'm very excited for that. Nice. But कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि is it worth being petty to people who eventually don't matter? Okay. I mean, I don't think it would take that much time, but that is my whole logic, right? Behind the like current my attitude is ki theek hai, whatever, karma will take care of stuff. Do you believe in karma? Yeah, I definitely believe in karma. बहुत strongly I believe in karma. Really? So, yeah. वो उसमें ऑफिस में था ना कि आई एम नॉट सुपरस्टिशियस बट आई एम अ लिटिल स्टिशियस. तो वो तो है, मैं नजर वगैरह में बहुत मानता हूँ. मतलब नॉट कि मतलब मैं उसे वो क्या आता था क्या टेली शॉपिंग पे जो चीजें दिखाते थे मैं वो सब नहीं करता हूँ. बट कभी कभी होता है दैट समटाइम्स यू एंड अप जिंक्सिंग योर ओन थिंग्स. तो ये तो मैं बहुत मानता हूँ कि कभी कभी होता है ना दैट टॉम एंड जेरी वाला मीम कि व्हेन यू सडनली बिकम टू सस्पिशियस कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सडनली,
Oh कि God, हाँ yeah, I हाँ really need tips on how to deal with that. I mean, I know the stream is not about that, but this is what I've been talking to all my friends about lately. Is कि the guilt associated with happiness. ah, I feel like ये वो 7 दिनों में ये problem होगी या नहीं होगी. हाँ What are okay, you? I need to take a call. हाँ हाँ ये Don't worry, work, I'll talk हाँ to the work chat. life है, तो I'm going to switch my video off Mhm. and दिशा आप सभी से बातें करेंगे. I'm not putting you on the spot, मुझे genuinely call लेना है. Okay, तो no worries. हाँ Yeah, cool, go for it. I will be back in 2. Okay, guys, now it's just us. Let me see what you guys have been saying in the chat. Anuj is saying, I will watch Bhais and these and will die sooner. रोहन वाव थंबनेल पे दिशा मैम का evil face होना चाहिए था. Yeah, maybe. Why is the chat so slow today? I'm genuinely confused by it. And please talk to me so that I can keep this going until Hindol is back. Did you guys attend my solo stream by any chance? Did you guys enjoy it? Because I will probably be streaming this Wednesday again. And okay, I can see myself on my phone abhi, and the minute it goes into a single screen, my frame looks so bad. Oh, okay. दुर्गेश बोल रहे हैं हमसे बात कर लो अब, वही चल रहा है. Humayu Kamran, hey Disha, really wanted some good song recommendation. The song playing in my mind currently is Please Don't Be Mad If I Come Along. It randomly popped up on my feed yesterday and I've been listening to it non-stop. And I think it's by an artist called, I don't know how to pronounce their name. It's Nayad or Nayad, I don't know. I don't think they're very popular. So the artist's name is spelled as Nayad. But yeah. Gaurav, hi Disha, have you heard a song to ask? No, I haven't, Gaurav, but I will check it out. This sounds interesting. Abhishek, I think you've written this in. I don't quite understand Punjabi, so to see classical literature cover nahi karti book. I don't understand what that means, and I'm going to butcher it, so I'm not even going to try to read it. Rohan is saying the solo stream was great, but to be honest, please don't let anyone in. Okay. I'll try not to next time. Anuj is asking what is life. आपको पता चले तो मुझे भी बता देना because I have no idea. Devang is asking, can you recommend anything related to filmmaking, books, documentary? I can't think of anything right now, but I'm pretty sure the episode Varun Grover had done with us, in which he had recommended documentaries, उसमें एक documentary है about filmmaking. उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, but that one is beautiful and you should check that out. Hello. So, hi. Hi. I heard about something about solo stream. Yeah, Rohan was like, don't let anyone in next time. Fair. Cool, great. Okay. See, अचानक अब chat is talking to us. हाँ nice. क्या चल रहा है? सत्यजीत कह रहे हिंदोल कुठे गेला. मी इकडे आहे. अँड तुम्हाला तुम्हाला जरा नाही शेट ये क्या हो गया. सगळ्यांनो स्ट्रीम लाईक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आणि मी मराठी इझी मराठी. सॉरी. Cute. Okay. ठीक है, we can go back to talking. हाँ cool. All good on your end?
हाँ हाँ हाँ, वही मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दैट कॉल, बट या ठीक मुझे है भी वो। उठना है जल्दी, so we'll ओ हाँ हाँ probably हाँ, कूल, वी शुड रैप अप जल्दी। तो कूल, ठीक है, तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे हमारा, तो यू आर गोइंग टू सेट अप लाइक ट्वीट्स एंड पोस्ट आफ्टर यू डाई, उससे Mhm, बीफ बनेगा। mhm, देन ड्यूरिंग में आप क्या करोगे, लाइक व्हाट विल बी द मेन एक्टिविटी विच यू विल डू? सो वी हैव स्ट्रीमिंग, आप स्ट्रीमिंग करोगे, विच mhm, इज लाइक एन अपडेट व्लॉग करोगे आप योर डाइंग प्रोसेस। व्हाट वुड यू डू इन द 7 days? अब थोड़ा इस पे आते hmm. So I think like I was thinking with all the money that I can spend, I हैं। would probably I would want I would fly all my close friends to some place, and then we can stay there for 7 days together. But I'm trying to नाइस। think what would fit the budget. If I had no budget हम्म and like this could be a crowdfunding thing, I would probably pick Ibiza. ऐसे हम्म पता भी नहीं if it's going to be worth it, but yeah, I would like all of us to go to Ibiza and नाइस party there for 7 days. नाइस। आई थिंक उसी थॉट पे आई वुडंट स्पेंड ऑल द 7 days विद द सेम पीपल। मैं मिक्स एंड मैच करूंगा कि Yeah. आई पिक लाइक द 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ माई लाइफ एंड आई Oh, गिव 1 day टू एवरीवन। तो उसमें देन आई वुड हैव टू रैंक हु इज more closer to me, so then I would keep them towards the end, hmm. because then like you go out with a nice finale. तो वैसे मैं प्रायोरिटाइज करूंगा, एंड बिकॉज विद ईच पर्सन माई रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट। जैसे कुछ लोग जैसे स्कूल फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो इन अ सर्टेन ग्रुप यू बिहेव डिफरेंटली, when it's just the two of you talking you behave differently, when it's like a third group you behave entirely differently, right? So Hmm. that is something that I respect, तो मैं ऐसे वन ऑन वन टाइम रखूंगा थोड़ा, एंड देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट पर्सन इज, फिर मैं फिगर आउट करूंगा कि क्या क्या कर सकते हैं। But only 7 people, that's too less. हाँ, I don't think I have a lot of I would people. want everyone to be available around me, so जब मन किया जिससे भी बात कर लो वैसे. हाँ, नहीं Yeah. वही मतलब मैं कुछ लोगों को तो ऐसे मतलब कॉल वॉल तो कर ही दूंगा, मतलब Hmm. वही देन आई हैव टू प्रायोरिटाइज। तो मैं बस ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं ड्रामेटिक सोच रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से आई विल पिक 7 people, बिकॉज लाइक आई ओनली हैव 7 days, और आई कैन मेक इट लाइक 14, कि आधा दिन इसके साथ आधा दिन उसके साथ। देन आई वुडंट स्लीप, या वन थिंग आई वुड नॉट डू इन 7 days, आई वुड नॉट स्लीप एट ऑल, क्योंकि आई हैव टू लाइक Agreed. Yeah. ओवर टाइम काम करना है, I would तो also want to do meth. I हाँ don't think that will allow me to sleep. हाँ, ये एडिट हो जाएगा बट ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ लीगल वेज आल्सो टू स्टे अवेक, तो हाँ हाँ, Hmm. बट या दैट इज समथिंग दैट आई एम वेरी श्योर ऑन, आई विल नॉट स्लीप। तो उससे मुझे और थोड़ा टाइम मिल जाएगा, एंड आई थिंक अगर इफ आई हैव टू ट्रैवल एनीवेयर देन आई कैन यूज द नाइट टाइम टू ट्रैवल, बिकॉज जनरली आई फील नाइट्स आर बेटर फॉर ट्रैवलिंग दैन डेज, क्योंकि गर्मी कम होती है, एंड somehow So yeah. music, हाँ, there are like some albums which hard hit really hard in the night, but दिन में वो उतना काम नहीं करते। तो I think nights are a good time to vibe to music as well, so I can like listen to all the good music that I like in the nights. Oh तो fair। yeah. I don't think I will sit and watch movies or read books or any of that, but हाँ music. Mm. हाँ, देखो म्यूजिक तो चाहिए, म्यूजिक तो हमेशा चाहिए। तो चलो कूल, एक लिस्ट बनाते हैं, 5 songs that you would want to like take on this 7 day trip. 5 songs. हाँ, तीन कर लेते हैं, 3 songs, 3 songs that Then you would like even to take. worse. No, I can't do that. ठीक है, cool. Can you do that? You have songs that you can pick? Because I just हाँ, so I don't much. know. I think अगर मैं थोड़ा सोचूं तो बन जाएगा लिस्ट, because what I'll do is I'll just pick songs which have a memory attached to them, so it kind of filters out my process. तो मैं उसमें deliberately sad वाले भी रखूंगा, because then what is life if not happy and sad? तो Hmm. तो वो भी थोड़ा याद करना चाहिए। And I think, yeah, I don't know, would you spend time on fixing relationships that didn't go well in the 7 days? Oh hell no. Why would I नहीं do that? नहीं, like are you okay with going out with like regrets कि यार ये हो जाता तो और अच्छा होता?
वैसा अगर हुआ I don't फेज. think I will have any regrets. I think other people will have regrets. Fair. काफी पॉजिटिव एटीट्यूड. This is why you're not chasing happiness. You are already in happiness. तो वो काफी. Uh-huh. I would definitely also cut my hair. And how many different hair colors does Clementine have in Eternal Sunshine? If she has 7, I would want to do one every day. Nice. That would probably fry my hair, but I really want navy hair and like short hair. So. Nice. हाँ, कल ही VM स्क्वायर पे भी वही बात हो रही थी कि हेयर कलर मैंने वापस जाके देखा. I was busy, but I wish I could have joined yesterday. And like मैंने स्ट्रीम पे भी बोला था कि I was very proud of the fact मैंने देखा कि हमने शुरू किया था full intellectual इसके साथ, and then we got hair color. But yeah. तभी मुझे लग रहा था कि oh shit, I missed such a great year. I would have jumped in right when the stupid discussion started. Yeah, I would pierce my nose, I would cut my hair, and I would also want to go bald. I really want to go bald once. I feel like I'm going to go bald anyway. तो वो तो होने वाला है. It's a choice for you. Okay, fair enough. क्योंकि because मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ लाइफ में. मतलब डेली लेवल पे मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, एंड मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं. तो एट जिस रेट पे मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं आई विल बी बोल्ड. आई माइट बी बोल्ड by the time I'm 30. So let's see. We'll figure out something. But हाँ, एक चीज जो मुझे करनी है, डेफिनेटली करनी है, एंड ये मतलब बहुत जुवेनाइल फैंटेसी है, बट ये मैं करूँगा बिकॉज अब है तो है. लाइक आई हैव ऐसे मैंने ट्रिप प्लान कर रखी है ओनली बेस्ड ऑन थिंग्स पीपल हैव डन इन मूवीज. जैसे मान लो कि वेगस जाना है विथ लाइक आई हैव ग्रुप पिक्ड आउट, एंड दीज आर नॉट लाइक द लाइक two of them are my, जैसे हैंगओवर में वही होता है ना कि 3 लोग बेस्ट फ्रेंड होते हैं और एक एलन होता है. तो मैंने वैसे 3 मैं अपने 2 दोस्त पिक कर रखे हैं और एक मेरा एलन भी पिक कर रखा है जिसको हम लेके जाएंगे, एंड एक वेगस ट्रिप करना है. देन और मैं बहुत सारे ऐसे सोच रखे थे, बट एनीवे अभी मुझे याद नहीं आ रहा. बट हाँ, वेगस इज ऑन द टॉप ऑफ दैट लिस्ट. आई नो बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा बिकॉज Vegas, Dubai, all these places are very like artificial. No, I think for a day it would be fun. Yeah, मतलब ऐसे कुछ ऐसे होना चाहिए, लाइक ऐसे प्लॉट ड्रिवन ट्रिप. तो I would like to get married if I'm not married. हाँ, but then you are leaving someone sad by the end of your life. I would marry a random person then who does not know me, and it wouldn't make a difference to them. Fair, काफी. So would you like ऐसे मतलब सड़क सब किसी को पकड़ लेंगे, whoever. हाँ, सड़क पे मतलब you look good, you will marry me, ऐसे करोगे या like would you put thought into it? नहीं, we'll make a whole स्वयंवर रखेंगे. Why would we lose out on content when we have the opportunity? Fair. You know, I know you will be running this whole thing. Yeah. What if like you are told that you will die in 7 days और आप ये सब करते हो, and on the 7th day a TV crew pulls out and he says कि hey, you are not dying. And yeah, this has all been a scam. So what would your reaction be? I'll obviously be happy. I'll probably have to apologize a lot. Yeah. But what if you die after that? Well, you will die after that, but yeah, kabhi na kabhi to, yeah. I think it would be honestly a very good it'll be a good thing for me. I will want to live life very differently in a much happier way, I think. Yeah. But then you have like let's say अगर आपने first iteration में कुछ गलतियां भी की थी, तो second iteration में आप उसको better कर सकते हो. तो yeah, I think हाँ I feel like once you're like in that mindset where up to you're going to die, I think a lot of things just become very clear and you stop caring about things. So even if I do make mistakes in those 7 days, I'm not going to care about them. हाँ, fair. कि मौत के मुंह से आई हूँ मैं वापस. Nice. Cool. So you are very clear that you won't carry any books, movies, shows with you in these 7 days. No, I don't think I'll have the time. But yeah, मैं सोच रही हूँ what do I like enough to want to sit down. नहीं, जैसे मतलब मान लो you want to create an experience. जैसे मैंने सोचा था कि like I'll book an entire theater to myself, and one day out of 7 days I will just like play
all my favorite movies. If not movies, I will play like the best moments of my life. अगर like उसका फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी है तो वो मैं लगा के देखूंगा थिएटर में. तो ये मैंने ऐसे रैंडम एक सोचा था. Oh तो yeah. हाँ, so is there any movie or show that you would want to see at the end of your life? I would probably, as I said, I would release all the art that I'm sitting on. So I would probably want to screen all that and watch that. Just nice. Nice. Yeah. It's Nice. going, these 7 days are going to be only and only about me. हाँ, वो तो है, वो तो that has been established. Also, I also have had this dream forever कि मुझे, I want to be on a stage and I want to sing, what is that rock on song? मेरी laundry का एक bill, एक आधी. Yeah, I want to do the whole thing with the crowd where I teach them कि when I raise my hand, like you all have to clap, that thing. I've been wanting to do that for so long. We'll do that. हाँ, कॉन्सर्ट तो करना है. कॉन्सर्ट तो मैंने भी सोच रखा था. But and concert में भी I want to do like जैसे मैं अभी बोल रहा था ना, I'll pick like 7 people वगैरह. So concert is a great way to like bond with people. तो जैसे मान लो you pick like your best friends and nobody knows how to play shit. And in the first 3 days all of you learn to play things. कि मतलब एक किसी को ड्रमर बनाएंगे, एक किसी को गिटारिस्ट बनाएंगे, एक किसी को सिंगर बनाएंगे. And obviously मैं फ्रंट मैन हूँ, तो हम सब सीखेंगे. And then on the 4th day we'll put up like a concert. तो उसमें भी like there's a nice dramatic arc, and it's something that all of us are doing together. So every time those fuckers will play that instrument, they will remember me. So it's a very twisted way of doing that. You just want to make sure everything is associated with you so that no one ever forgets you. Yeah, and everything हाँ, ये आइडिया मुझे आया था वो पिक्सार वाली मूवी नहीं है कोको. कोको देखने के बाद ये मुझे आइडिया आया था, बिकॉज आई क्राइड लाइक अ बिच इन दैट मूवी. उसमें जो उसका वो हो जाता है पूरा रिमेम्बर नहीं वाला, तो हाँ काफी काफी वो था. बिकॉज yeah, that is, I have a very big fear that no one will remember me when I die. तो पता नहीं. So, yeah, I don't quite get it. Like everyone talks about the fear of oblivion a lot, but how would you even feel that people have forgotten you? मतलब I don't know. Like I have seen a lot of old people when they get lonely at at the last stages of their life, and that's what I mean by being remembered. Ki you are suddenly sitting by like in your life and you just feel ki nobody remembers you. I'm saying that at the end of my life I don't want to be like जब तक मैं जिंदा हूँ, बाकी मर गया तो फर्क नहीं पड़ता, but while I'm alive please remember me. वो मेरा ये है. क्योंकि वही तो कोको में भी वही होता है ना कि ओनली आफ्टर इट बिकम्स अ घोस्ट एंड एवरीथिंग वो वापस आता है. एंड देन आपने देखी है ना कोको की? मतलब मैं थोड़ी सी याद नहीं आ रही प्रॉपर्ली. ओके ठीक है इटालियन वन नो? हाँ, मैक्सिकन. अच्छा. हाँ या ग्रेट मूवी, सब देखिए, काफी अच्छी मूवी है. एंड पिक्सार डूइंग व्हाट पिक्सार डज बेस्ट, मेकिंग पीपल क्राई एंड making them realize that how shitty their lives have been. But yeah, Pixar movie what are things you would not do? I would not sleep for sure. Then I would not waste my time on travel. I would not waste my time in traffic. मतलब मैं इतना तो अमीर होना चाहता हूँ कि बाय द टाइम ये 7 डे वाली चीज हो कि मैं एक चॉपर अफोर्ड कर सकूँ, तो मैं कहीं से कहीं पहुंच सकूँ. देन आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन पीपल हु डोंट मैटर. सो वो तो मतलब टॉप प्रायोरिटी पे है. And so how many people roughly will get cut out of your life? A lot of them. Yeah, See, a lot this of is them. why you're stressed out and all. What are you doing? Yeah, a lot of them will get cut out. हाँ, मतलब वही है, मेरा inner circle is not more than like 5-6 people though. So yeah, that's that says level. Would you try to somehow extend the period that you're alive for? Would you get into that mindset ki how can I change this? No. I don't want. हमने हार भी मान ली. Would you want to extend your life? ठीक है, 7 दिन है. Okay, cool. हाँ नहीं, आप बताओ ना, what would you not do? What would I not do? Yeah, same as you, like not waste time on people. But I don't think I have any of those around anyways. So I would probably, I don't know. I would definitely, so I put a lot of pressure on myself to eat healthy. I wouldn't eat healthy at all.
I would eat all sorts of crap. Nice. हाँ वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो there is not something that ये होता है, but हाँ I should start eating healthy. But देखते हैं, नहीं तो वो 7 days का पता है, what if like you eat something and your 7 days period gets reduced to like 2 days, and then, oh shit. Oh my god, yeah. I would also like to go skydiving. हाँ skydiving तो यार बहुत. Basically do anything that might result in death. I want to मुझे नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों में से कहीं एक जगह जाना है. Like I want to see penguins in real life and मेरे को रहना है penguins के साथ एक दिन. I would also end up eating them because वो भी मैंने सोचा था penguins कैसे होंगे. But you want to eat penguins? Yeah, if it's legal. Hindol, I send you pictures of cute penguins on Instagram like every other day. You want to eat them? I didn't know this. Okay, so okay, I have read about this, so I know that this is a real thing. But don't you ever see something very cute and adorable, and you feel like you should eat it? ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? No, I won't Not actually eat it. literally, actually, yeah. Like you look at babies with the hair, fat cheeks, and you just. हाँ मतलब symbolically, metaphorically होता है ना. मैं वही कह रहा हूँ. I'm not saying I would actually eat them. हाँ. So yeah. Like that's the reason I see like cat videos all the day. That doesn't mean that I will eat cats. So yeah, it's like symbolically I would want to eat them. What else? Do you want to be? मुझे कुछ change ही नहीं करना. Do you want to be reborn? मतलब reincarnation में आप believe रखते हो? हाँ, but मुझे बहुत डर लगता है कि I won't be born as someone that I would be happy being born as. मेरे को तो स्ट्रेस ही नहीं चाहिए, मेरे को वापस ये नहीं करना. हो गया ना, एक बार कर लिया. कुछ दूसरा है, वैरायटी है, ऑप्शन है तो दिखाओ. कर सकते हैं so yeah. But if I could stick around as a ghost, I would like that. That is something I would be interested in. ये interesting thought है. What kind of a ghost would you want to be? What kinds are there? नहीं, जैसे कैस्पर होता है. कैस्पर इज लाइक द नाइस फ्रेंडली, सबको हेल्प करता है. फिर एक होता है आपका कॉन्जरिंग वाला, जो मतलब जंप स्केयर्स देते हैं. फिर बीच में भी होते होंगे लाइक ग्रे घोस्ट भी हम बना देंगे एक की, वो अच्छा भी है बुरा भी है. फिर भूतनाथ होता है एक, वो भी मतलब कैस्पर का अडल्ट वर्जन होता है. तो what kind of a ghost would you like to be? तो अच्छा भी है और बुरा भी है, or maybe just someone who just gives jump scares. I don't want to do any actual harm, but I would like to scare people. नहीं, मेरे को कैस्पर बहुत अच्छा लगता था बचपन में. like as a ghost also he was like a child कि he used to think like a child. तो मेरे को कैस्पर बहुत सही लगता था. So I would be like one of those कि मतलब ऐसे कोई अगर बच्चे अगर बुली वगैरह हो रहे हो तो like I would use my powers to kind of help them. तो मैं वैसा करूँगा. I would become TV show is this? Huh? This is TV show, no? I wouldn't be surprised if it is, but yeah, I would want. हाँ, अगर मैं भूत बन गया तो मैं सुपर हीरो बनूंगा, क्योंकि इंसानी लाइफ में तो आप सुपर हीरो बन नहीं सकते. तो हाँ, भूत बन गया तो मैं सुपर हीरो बनूंगा. ये तो है. Agree. Are there any nice ghosts? Not that I have met any. I want to have a stream where we talk about like horror stuff and paranormal things, but I don't know if I have enough to contribute. हाँ, even I don't have enough to contribute यार. क्योंकि मेरे के लिए horror movies work नहीं करती. Not that I don't get scared or anything. मेरा just ये है कि I know it's a movie, तो मेरे को डर नहीं लगता. तो बहुत weird है. But if it's like good psychological horror की मतलब oh shit ये लोग मरने वाले हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो then like I'm very invested. जैसे Quiet Place में I was very invested. तो अगर उस टाइप की horror हो तो then I'm invested. Otherwise भूत मेरे को इतना ये नहीं लगता. Yeah, even lately I've been watching a lot of scary movies and इतना कुछ I don't know, it's not working for me. But I remember, I don't know if that'll happen again, but एक साल पहले मैंने Haunting of the Hill House का first episode देखा था, and तब I was like I wanted to say fuck for days, but yeah, I think हमने कस कर लिया बहुत बार. हाँ. I think see देखो, अगर आपके सिर्फ 7 दिन बचे हैं ना, I don't think you would care about language. Yeah.
Yeah. Oh my God. Yeah. 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 Should we start living like that? No. Yeah. Should we start living like that? Like what? You don't give a shit. Yeah, 7 days mentality. हाँ 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 100%. Yeah. Every at the end of every 7 days you feel like, oh shit. Oh, I would love to act. I would love to act. I would want someone to make a movie so that I can नहीं. act. अच्छा, so like so why would you not make your own movie? मतलब act भी आप करो, It direct would भी आप be करो, too much to वैसे. like do at the हाँ, same. but what if like you put your heart and soul into it, but it turns out to be a shitty movie? I'm dead. I don't know. हाँ, Nothing but like everything that you put your effort into will end up getting wasted. I don't care. I just want to act. अच्छा, वैसे तो मतलब आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि you're acting good or not. You just want to act. Yeah. And I think like हाँ. wouldn't the element of, oh, I'm gonna die, I better do this well, like play a role, and maybe it will be, and also people who are watching, they will be more like, they'll go easy on me, they won't be so harsh with their judgment. But हाँ, वो तो है कि like reviewing dead people's work में वो तो आपको already एक वो मिलता है. बोल के But दिखाओ तुम कुछ नेगेटिव. हाँ. No, but again, in acting and like anything related to the arts, there's always a angle of validation that you do it because you want validation from people. So that's what I'm thinking, that if you want to act, then there's no like. Oh no, this is not for validation. This is something I feel like I would enjoy doing a lot. So I would do it for that reason. What kind of a role would you play? Like a prosthetics वाला पूरा वो करोगे कि you'll just Oh like no, be. I want to look good in it. हाँ. Like old money wife who like a widow. Okay. Husband, like, yeah, her husband left her a lot of money and passed away. And have like हाँ. this huge palace to myself. Yeah, I'm starting to think this is not about a movie plot. ये Is it मतलब थोड़ा कुछ personal ambition वाली बात है. But हाँ हाँ हाँ, I would also love to play the Write a wife. movie and all. I'm just giving you my advice and maybe. नहीं नहीं, मैं करूँगा तो फिर ये Gone Girl वाले direction में जाएगा तो. Oh shit! Yes, I हाँ. would go Gone Girl on so many people. हाँ. On screen, off screen. I mean, then since You you are only. chuckling extra hard because you know what I'm talking about. And in those 7 days we can like build a nice PR story also कि you method killed people to get into character. So yeah, so the people who are dying for the sake of art. So I think that's a good cause to die for. No. So, yeah. Maybe. Achha, the people that are getting killed. हाँ, the people who are killed हाँ. off screen. हाँ. तो वही करेंगे, मतलब जो भी जैसे भी आपको जिन जिन लोगों को मरवाना है आप लिस्ट दे दो. सो वील फिगर आउट लाइक, सो व्हाट वील डू इज हम मूवी लिखेंगे इस तरह से कि जिस जिस तरीके से आपको सबको मारना है हम वो स्क्रिप्ट में डाल देंगे. सो व्हेन यू आर किलिंग देम इन रियल लाइफ इट्स प्रैक्टिस फॉर द मूवी. And then we'll shoot that itself and we'll just replace the person's face. तो उससे हमारा टाइम भी बचेगा. And you just imagine them reviewing the footage in the court. Yeah, because see, I have worked in production as well. So मतलब मैं अभी लोकेशन कम कर रहा हूँ अपनी, तो इससे शूट जल्दी हो जाएगा मेरा. Okay. Yeah. I think thoda I'll bring back my sweet soft side because I have been called evil 3 times. नहीं, see, you only have 7 days, so. Okay. Yeah. Carpe diem. I will embrace. I am the villain. Yeah. Yeah. सत्यजीत ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू लिव इन अ बिग हाउस. साफ करने में ही सब टाइम चला जाता है, which is fair. No, but I'm rich, no, so I'm assuming I'll have help with that. हाँ, unless आप खून साफ कर रहे हो. I'll have help with that also. But then you'll have to kill the help. You know why the big house thing came into my mind? Because I was thinking of Om Shanti Om and how like Deepika was a good ghost and I would like to play her. Nice. Yeah. हाँ, ऐसे भूतों को भी फैशनेबल होना चाहिए. मतलब ऐसे कब तक आप सफेद चादर पहन के घूमोगे? And do they like wear the outfit forever that they died in? हाँ, भूत लोग नहाते होंगे क्या? मतलब I'm assuming कि
like ghosts would want to, you know, change their look. Hmm. Like, what if you die wearing something you don't like, and now you That are is where stuck with that it? phrase comes, no? From I wouldn't be caught dead. Yeah, yeah. लमाओ dead हो जाएगा वो. Hmm. हाँ यार, वो बहुत सैड होता है कि लाइक मतलब आप सोचो कि यू डाई वेयरिंग समथिंग अनकंफर्टेबल, एंड देन एज अ घोस्ट यू हैव टू वेयर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, रेस्ट ऑफ योर आफ्टर लाइफ. तो वो काफी अजीब हुआ. Time to wrap it up. Okay. हाँ. Abhishek कूल. is asking you something. अब Oh, अभिषेक. asking. हाँ. उन्होंने पंजाबी में ऊपर भी कुछ लिखा था बट मुझे समझ नहीं आया. अच्छा, अभिषेक जी ने कहा स्पेनिश पॉप भी सजेस्ट कीजिए. स्पेनिश Hmm. पॉप. स्पेनिश पॉप तो यार मैंने ज़्यादा सुना नहीं है, बट एक दिलजीत दोसांझ का गाना है, इट्स कॉल्ड एल सुएनो, एंड वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एंड इट हैज स्पेनिश लिरिक्स एज वेल, तो आई थिंक दैट शुड क्वालिफाई एज स्पेनिश पॉप. जेन्युइनली अच्छा गाना है, मैं बहुत सुनता हूँ. सो Oh, या okay. या I don't know any Spanish pop. बाइलामोस. I was saying Taki Taki. या Is that the name of the song? तकी तकी रूम्बा, वही ना. Mm-hmm. हाँ. Oh, तो I also want to buy like a Roomba. हाँ यार, रूम्बा मुझे, मैं जब से ब्रेकिंग बैड देखा है ना, मैं तब से मेरा ये है कि मेरे को रूम्बा चाहिए एक. वो बहुत मतलब फील आती है यार उसको देख के. It's like a pet which you have which is useful also. तो मेरे को काफी सही लगता है रूम्बा. आई वुड वांट अ रूम्बा which looks like R2D2. स्टार वॉर्स में R2D2 था ना, तो Hmm. अगर वैसा रूम्बा हो तो काफी मतलब फील आएगी. सो कोई अगर है देख क्या रहे, वैसे? रूम्बा इन्वेंटर्स अगर आप कोई देख रहे हो तो प्लीज एक बनाओ यार, R2D2 वाला रूम्बा बनाओ, मैं पक्का खरीदूंगा. तो या. Hmm. What is like an expensive purchase you would make? Expensive purchase. I don't know if it would be feasible or not by the time I pop it, but I would want to go to space before I die. मेरे को देखना है क्या है वहाँ पे. Hmm. Oh yeah, Like that would be a good one. हाँ, in things that I don't want to do when I die, उसमें है कि I don't want to die sleeping, I don't want to die in a hospital, I don't want to die of any disease. I just like normally बिना least effort वाला चाहिए. तो if it happens in space, then I would be very excited. मैं साइंस के लिए अपना शरीर दे रहा हूँ. Hmm. तो yeah. What is something that you would buy expensive? I'm trying to think of things, but maybe a private jet, but again, maybe not feasible. हाँ. नहीं, प्राइवेट जेट की मेरी एक स्टोरी है. तो आई यूज्ड टू वर्क एट एन ऑर्गेनाइजेशन. मैं गया नहीं हूँ प्राइवेट जेट में. ये दिस वाज फॉर अ फिल्म फेस्टिवल. वी हैड इनवाइटेड फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, एंड उनसे बात बात हो गई थी, एंड ही वाज लाइक कि हाँ हाँ वेलकम, एंड वी डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग अप द मनी टॉपिक विथ हिम कि सर क्या कॉस्ट वगैरह क्या होगा. तो समहाउ जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उन्होंने पूछा उनको कि सर क्या कॉस्ट वगैरह होगा. बोला नहीं नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं होटल वगैरह अपना फिगर आउट कर लूंगा, मेरा प्राइवेट जेट है तो आई फ्लाई, एंड मेरा ट्रैवल उसी से होता है, तो आप बस उसके फ्यूल का कॉस्ट दे देना, बाकी सब ठीक है. बोला ठीक है, हाँ ये तो हो जाएगा. तो हमने निकाला कौन सा प्राइवेट जेट का मॉडल है वगैरह, एंड देन वी कैलकुलेटेड द फ्यूल फेयर. सिर्फ फ्यूल फेयर वाज 3 करोड़. तो हाँ, तो हम नहीं बुला पाए फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को. Oh my God. Did you get to talk to him? नहीं नहीं नहीं, आई जस्ट नो ऑफ दिस स्टोरी फ्रॉम द पर्सन हु स्पोक टू फ्रांसिस फोर्ड कोपोला. Oh, तो एक friend के friend के friend. यस, समवन आई नो. Got it. What else? You know who would be good at this? Tom from Parks and Rec. He would know how to spend money, how to do it. Have you watched Parks and Rec? मैंने फर्स्ट सीजन देखा था, फिर आई वाज लाइक कि नहीं, द ऑफिस इज बेटर. Then you might not. Yeah. कूल, ग्रेट. तो हाँ, आई जस्ट होप कि बाय द एंड ऑफ आवर 7 days ऐसे awkward ending ना हो. आई होप देयर इज लाइक अ नाइस एंड. Some बट smoother exit. हाँ, Yeah.
Yeah, but you know what? अगर है भी awkward and तो चलेगा, I don't give a shit. क्योंकि it's genuine, it's human, it's At least it's heartfelt. on brand. Yeah, Yeah, that is yeah, far more important. yeah, it's on brand. So yeah, cool. Let's talk to people a little bit. हाँ, Just feel weird we haven't spoken to people yeah. today. Akash Deshpande कहने you purchased a MacBook. That's quite an expensive spend. Yes. Great. हाँ, मैं इसके बारे में सोचने अवॉइड करता हूँ कि बिकॉज मेरे को अभी ईएमआई भरनी है उसकी. बट या थैंक यू आई डोंट पता नहीं यार, अभी भी मेरे अंदर वो मिडिल क्लास वाली बात जाग जाती है कि आई शुडंट टॉक अबाउट दिस वरना जिंक्स हो जाएगा. बट या इट्स नहीं, don't worry. सम थिंग्स. You are divinely protected, Hindol. Yeah. No, but have you had your moment yet? Have you gone to a coffee shop and opened up your MacBook to edit something? Okay. Oh yes. I opened up an empty document and typed this gibberish just for the feels. But हाँ, वो तो हो गया, काफी सही हो गया. And Ahmedabad में मैं भी गया था. I almost forgot my bag. So what I do is when I'm sitting in the car, मैं bag अपने ऊपर ही रखता हूँ, so I don't forget it. And while checking out, हमने car में सारा सामान रख दिया, and I had forgotten my bag. And we were in the car, हम थोड़ा आगे निकल गए, and then I realized I'm feeling lighter. There is something wrong. Oh. Then I realized, oh shit. Oh my God. Yeah, so then I went back, I got it. बहुत ज़्यादा पड़ गई थी उस दिन. Oh shit. Yeah. I don't think I would be able to recover from it if you had misplaced the laptop. Yeah, मैं नस काट लेता, मैं पक्का नस काट लेता. Oh my God. So, yeah. Cool. I don't think Darshan is asking what about karma. I don't know where that is coming from, but I don't know if I believe in it, because every time I have made a mistake, I think it depends on what I believe about that mistake. If I think, okay, this is something I could have totally avoided and I deserve punishment. Hindol, why are you doing that? It's so rude. Sorry. Should we wrap it up? नहीं. हाँ, बोलो. Are you sure? हाँ. Yeah. Now I've lost my. हनी, हम अब karma के बारे में बोल रहे. Yeah, karma. हाँ. You don't believe in karma. Yeah, because there are times when I'll make like a mistake that I don't believe is genuinely my fault. It is something that could not have been avoided at all. So फिर कुछ नहीं होता. But if I think that it is something I could have avoided, then I will subconsciously create circumstances कि I will start punishing myself for it, basically. So I feel like the karma element is whether you believe you deserve to be punished for it or not, and accordingly you will create circumstances in that sense. Isliye I don't believe in it, but at the same time I have seen other people like get karma when they've done something wrong to me. But I'm just thinking about karma from a punishment aspect, क्योंकि अच्छा karma भी तो हो सकता है. हाँ, मतलब जैसे हमारी पहले भी अभी बात हुई कि we don't appreciate the good things when they happen. At least मेरे लिए तो यही है कि sorry, even when we did the I think they weren't talking about karma. हाँ ठीक है, हम बात कर रहे हैं कर्मा, हमारा स्ट्रीम, हम जो चाहे कर सकते हैं. बट नहीं, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, when something good happens to me, at least मैं I'm just like, हाँ ठीक है, I need to move on from this. हाँ ठीक है, I don't deserve happiness. I'm a piece of shit. I don't want to think about this. तो वो है. बट इफ समथिंग बैड हैपेंस, तो वो मतलब ऐसे बड़ा सा ये बन के मेरे सामने बैठा रहता है कि दिस इज योर फेलियर, यू हैव टू लाइक रिमेम्बर दिस. तो वही है कि कार्मा के बारे में, व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, देन यू स्टार्ट क्या कहते हैं, रेट्रो थिंकिंग, कि मैंने ये किया था, उसकी वजह से ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड दिस इज व्हाई दिस हैज हैपेंड. बट व्हेन समथिंग गुड हैपेंस, यू नेवर थिंक अबाउट कि यू नो व्हाट, शायद मैंने ये किया था तो उसकी वजह से ये हुआ है. बट वही है कि मतलब कहते ना कि इफ समथिंग गुड हैपेंस, देन रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम इट. जस्ट से दैट there is a greater power that made things happen, and when something shitty happens, then it's like it's entirely your fault. तो ये सारी टॉक्सिक चीजें मुझे सिखाई गई हैं घर पे, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता इसका. बट yeah, this is something that I want to like take out of my head. So yeah.
Albus Dumbledore, that's so rude of you. What is rude of you? Sorry. Sorry, Dumbledore bhai. Rohan is saying great and all by you defend things so nicely. ना फिर अब रियल लाइफ में मिलो कभी. Nolan is so stressed these days. He's not gonna play around. If you guys try to mess up anything, he's gonna call you out. हाँ कुछ भी तुम बुरा बोल के दिखाओ क्विज के बारे में या किसी के बारे में. नहीं मैं ऐसा कुछ ये नहीं है. बहुत हम सब अभी भी या. I will do it. The quiz was so great. A school friend of mine texted me saying कि तूने वो वाला question देखा चेतन भगत के books वाला. Like हाँ यार. That was great. What was your process behind that? The process is not having a social life for the past 22 years. That's the secret sauce. This is what we love, the humility. Yes. क्या वो डीजे खालिद वाला क्या था? Stay down, be humble. So suffering from success. Yeah. निशांत यादव पूछ रहे हैं, can I recommend something? Please do. Please recommend कीजिए. I feel like he's gonna give us feedback about the stream. हाँ, feedback है तो मत दीजिए. मत देना. हाँ, but if you recommend करना है movie, music वगैरह तो कर दो. हाँ. अर्जुन सिंह ने कुछ लिखा है which I take with a क्या बोलते हैं उसको pinch of salt. Yeah. But yeah, thank you Arjun, I guess. So Diljit पूछ रहे हैं, is legacy important to you? Do you care what people remember you for? How they remember you? आप बताओ. सोचना पड़ेगा यार इसके बारे में. I used to think that I don't, but I think it's because I'm young, that's why. But I feel like as I'm growing up, so now I've started caring about what people perceive me as and what they're going to remember me as after I'm gone. Yeah, I kind of feel that when you are kind of going away, आपकी पूरी life आपके सामने होती है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया. You tend to have objectivity on a lot of things. So sometimes there are things that people want to clear up before they go. And this is something that I have seen in the case of my grandmother. Because my grandmother and my mom never got along, like they fought their entire life. And when she was on her deathbed, the only person she actually kind of spoke to, because my grandmom was in a coma and she woke up only for some time, was my mom. तो वो थोड़ा एक मतलब poetic circle वो हो गया था. But वही होता है, sometimes you have some regrets which you kind of want to close before you go. So I'm sure कि by the time our 7 days come, कुछ ना कुछ तो होगा which you would want to. But नहीं है. हाँ, अगर regrets नहीं है तो अच्छी बात है. Then you are free from everything. You can enjoy life if there is anything to enjoy. Yeah. So yeah. Swamit K in an interesting सवाल पूछा है. So now that we are talking about karma, I have a question. Do you believe in God? Let's not go there. ठीक है, cool. Not towards the end of the stream at least. Yeah. Do you think we would stream on that topic? Why not? करते हैं कभी, मतलब. Okay. I think we need to be a bit more mature about it. Yeah, we would try to make a joke out of it, and that would go 100% वो तो होगा ही. तो थोड़ा हम but if we are talking about God, I would only like to talk about God and faith, not religion as such. So that is a difficult line to toe, and I think we need to be more mature for that. But someday we will do that stream, and that will be only 5 minutes. Kushagra saying don't end so soon. That's so sweet. Nice. That's the first time someone has said that. Yeah. But yeah, I guess this is time to end. हम हमेशा यही सोचते हैं कि 1 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे, and we'll stick to topic, थोड़ा ऐसे मतलब अच्छे से करेंगे. Then cut to ऐसे 3 घंटे निकल गए होते हैं. And no, but this today's stream I was genuinely looking forward to, because again has been so long. We are going to try to be much more consistent from now on.
I'm not going to Not me. promise that. I'm not going to promise that because ठीक है मैं थोड़ा honest life update दे देता हूँ सभी को कि at least मेरे end पे क्या चल रहा है scene. So like I mentioned, I have started a new job and I can't talk about what exactly it is in public, but it will involve me traveling a lot. तो हम कोशिश तो जरूर करेंगे कि हम मतलब रेगुलरली करते रहें बट हो सकता है कि थोड़े गैप्स लंबे हो जाएं बट हाँ हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे बट हाँ ये दिशा विल बी डूइंग हर सोलो स्ट्रीम्स कभी नेक्स्ट सोलो स्ट्रीम इसी हफ्ते हो रहा है राइट Hopefully, yeah. हाँ कब हो रहा है कुछ आइडिया है या Wednesday को at what time? हाँ मतलब वेडनेसडे को हो रहा है ना टाइम तो अपन कर लेंगे Yeah, हाँ Wednesday को, हाँ, हाँ if it happens. हाँ तो दिशा की सोलो स्ट्रीम्स होंगी एंड क्विज भी होगा शायद एक और वो भी अभी चल रहा है थोड़ा तो मैं रहूंगा मैं यही हूँ बट थोड़ा सा मैं ऐसे अभी जीवन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि वही अभी थोड़ा वैसे हो रहा है कि समर वेकेशन खत्म हो गया एंड नाउ हैव टू डू एक्चुअली But व्हाट आई हैव टू डू this is so nice to see because I remember I think 3 streams back you were talking about how like you are at a point in life where पता नहीं ये job मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा which direction life is gonna go. या So now that you've gotten it and you look happier and या you look like you're really enjoying it. It's very nice to see. या बट हाँ यार मतलब वही आई हैवंट हैड एनी टाइम टू प्रोसेस अभी तक क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट इवन नो इफ आई एम हैप्पी और नॉट क्योंकि बहुत कुछ हो गया लाइक लास्ट 3-4 हफ्तों में तो वही आई डोंट इवन वांट टू लाइक स्टॉप एंड थिंक नाउ अभी मेरा है कि खत्म करते हैं आगे बढ़ते हैं एंड देन फिर तो जब 7 दिन वाला अलार्म आएगा तब बैठ के सोचूंगा सब कि क्या हुआ नहीं हुआ तो Yeah. आई No, but aren't you ever scared of that? That is something that has been worrying me because of how eventful life has been. Ki things are happening so fast, you won't even realize kahan chala gaya time. हाँ उसमें द ऑफिस में उसका कोट होता है ना एंडी बर्नार्ड का कि आई विश देयर वाज अ वे टू नो व्हेन यू You're आर in इन the द good गुड ओल्ड days. डेज Yeah. व्हेन यू आर इन द गुड ओल्ड डेज तो हाँ Yeah. वो तो कभी नहीं होता बट कभी कभी होता है यू नो लाइक ऐसे बचपन में ऐसे मोमेंट्स होते थे कि यू नो ऐसे कुछ ग्रुप में सब हंस रहे हैं कुछ ये हो रहा है एंड मूवीज में होता है ना कि एक बंदा ऐसे थोड़ा पीछे जाके वाइड फ्रेम में देख रहा होता है कि आज ये हो रहा है एंड यू नो एंड द ऑडियंस नोज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू कम बैक एवर अगेन तो या आई डोंट Yeah. नो या बट आई होप Well, there will come a time when we'll stop streaming too, right? हाँ which by that would mean that one of us has passed on in the 7 days तो Or we are doing very well career-wise and can't commit time to. नहीं नहीं देखो तो ये मैंने ऐसे सोच के रखा है लाइक इवन व्हेन आई हैव करियर थिंग्स एज वेल तो द रीजन आई वांटेड टू डू स्टैंड अप वाज दैट आई हैव समथिंग पैरेलल टू काइंड ऑफ वेंट आउट when like मेरा I have been a person जिसका कभी सिंगल हसल नहीं रहा I have had like side hustles all my life तो if I have only one thing to work on मेरा दिमाग पक जाता है तो चलचित्र is like that outlet for me to vent out every Sunday कि हाँ भाई चलो क्या हो रहा है लाइफ में सब ये करता है तो इवन इफ आई बिकम बिग और एनीथिंग मैं रहूंगा मैं यही हूँ अनलेस मेरे को वैभव चैनल का पासवर्ड चेंज कर दे तो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन You have a बट fight with Weber when you get kicked out. yeah or like we have to stage a fight to like gain 1 million subscribers तो Oh वो my सब कर God, yeah. हाँ वो सब करना पड़ेगा but नहीं यार this is like kind of I have kind of figured out कि this has a place in my life at least for now so I would want it to stay that way. Honestly, same. I just wish that we could openly talk about all the things we talk about, but it's not possible. Like, give people who are watching actual gossip, but names and everything. हाँ नहीं यार मतलब जैसे आज हमारी चैट सब्सक्राइबर्स ओनली चैट थी तो वही है लाइक वी आर आल्सो काइंड ऑफ ट्राइंग टू फिगर आउट जैसे चैट में भी अभी कुछ भी लोग हमें नाम याद है कुछ भी लोग हम जानते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है जैसे रोहन है रोहन के साथ हम सबकी बात हुई है तो वही है कि वी लाइक हमारा भी बॉन्ड बन रहा है ऑडियंस के साथ तो व्हेन इट्स लाइक अ टू वे communication in a relationship then you also feel more trusting कि like you know I can open up नहीं तो ओवर शेयरिंग तो बहुत की है हमने जिंदगी में तो No, but I want to say that I think this is the first stream where I am not
I feel very relaxed. And I think now I have gotten the hang of it. So I think 14 is the number. You have to do Nice. 14, 15 क्योंकि मैंने अपने अकेली भी की थी, but हाँ you have to do 15 streams before you can get comfortable. Because नहीं today I feel very comfortable. बट आई वुड से दैट नेवर गेट कंफर्टेबल, क्योंकि कहीं से कुछ भी गुगली आ सकती है फिर लोग फिर किसी दिन कोई I know my lesson. हाँ तो वही है, यू नेवर नो मैन, मतलब कभी कभी लोग आपको ऐसी चीज आके पॉइंट आउट करेंगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। लाइक अगर कल को कोई मुझे आके ये कहे कि सर आपके बाल बहुत अजीब उगते हैं, मुझे डिस्ट्रैक्टिंग लगता है, तो ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो That is such a specific thing to say. या मैंने बोला है क्या? no comments. But yeah, Okay. yeah. No, So your hair looks very nice today. हाँ वो सब It लाइटिंग, looks slightly red also because of the light. हाँ हाँ वो सब अभी लाइटिंग हुई है, अभी नया सेटअप है ना, तो मतलब वही है। सो अर्लियर जो मेरा दूसरा सेटअप है विच इज ऑन माय लेफ्ट राइट नाउ, तो उसमें बैकग्राउंड मेरे को अच्छा नहीं मिलता था, बट दिस इज द बैकग्राउंड दैट आई वर्कड अ लॉट ऑन। इसमें बहुत पैसे खर्च हुए मेरे। तो ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रीमिंग सेटअप था, बट माय ओल्ड लैपटॉप कुडंट सपोर्ट जूम, तो मुझे फिर दूसरे सिस्टम से करना पड़ता था। तो एनीवे नॉट इम्पोर्टेंट, पॉइंट बीइंग कि अब मेरे पास लैपटॉप है, दैट्स इट। सो या Changreta कह रहे हैं, man I've never overshared. It is that something weird. You are normal and हाँ you are in control. I overshare so much. Oh my god. I have so many conversations that I regret because I overshared a lot, and especially on like dating apps वगैरह बहुत ज़्यादा ये तो मैंने अभी रूल ऑफ थंब बना रखा है कि किसी भी प्रोफाइल पे अगर ये लिखा हो कि Yeah. होता है ना प्रॉम्प्ट्स देते हैं लोग एंड कुछ लोग आंसर देते हैं। एक मैंने अभी ये बनाया कि अगर किसी प्रोफाइल पे ये लिखा हो कि आई विल से दैट आई डोंट वांट फ्राइज बट आई विल स्टील फ्राइज फ्रॉम योर प्लेट, अगर ये किसी भी प्रोफाइल में लिखा हो ना, तो उस प्रोफाइल के साथ कभी ओवर शेयर मत करना। ये मतलब पता नहीं, इट्स सम रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम मी कि ये है। अब ये स्टीरियोटाइप कह लो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस कह लो, जो भी कह लो, बट ये है। और ये मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, दिस हैज हैपेंड लाइक मल्टीपल टाइम्स। तो Oh, okay. yeah, So this you is have first evidence hand. back it. Yes, I have evidence, so this is first Has hand। anyone ever recognized you from like नहीं, उतने उतने फेमस नहीं हुए हम। आईआरएल हुआ है, आईआरएल 2-3 बार हुआ है, Oh बट हाँ wow. हाँ। Oh, तो nice. या अभी होगा आपके साथ भी होगा, आपके साथ बहुत ज्यादा होगा, तो या बी प्रिपेयर्ड। It hasn't happened to me yet, but सुन I just feel like I would be, yeah, it wouldn't be a good year. हाँ Like, मैं तो बहुत ऑकवर्ड हो गया था। अभी हम गए थे ना इसके लिए, पुल का जो ट्रिप हुई थी, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आकाश और मैं खड़े थे, आकाश हैंडल्स वाला सोशल मीडिया वगैरह, तो हम बैगेज बेल्ट पे खड़े थे एंड देयर वाज वन पर्सन जो मतलब बहुत टाइम से सब्सक्राइबर वगैरह थे, हमें पता नहीं था ये सब। सो ही वाज इन द फ्लाइट एंड ही वाज लाइक लुकिंग एट अस, तो हम लाइक does he know us, क्या हो रहा है? Then he came to us, he spoke to us very nicely oh, and मतलब काफी मैं बहुत awkward हो गया था क्योंकि पहली बार हो रहा है मेरे साथ। So it was a very nice experience। तो yeah. वो था। फिर इन्फिनिटी मॉल में अभी मैं मूवी देखने गया था, एक वहां पे हुआ था, तो Yeah. हाँ Oh, nice. तो So, like, what was the conversation like? ए लव योर चैनल। So Okay. yeah, thanks। That end of conversation। मैं आईआरएल बहुत awkward हूँ, तो मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं जब कहीं लाइक रियल लाइफ में मैं चल रहा था, 4 चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, लाइक आई हैव अ वेरी डीप इनर मोनोलॉग व्हिच आई एम अ पार्ट ऑफ। तो आप अगर मुझसे रियल लाइफ में बात कर रहे हो आउट ऑफ नोवेयर, तो बी डू नो दैट आपने मेरा इनर मोनोलॉग अभी इंटरप्ट किया, तो इट्स गोइंग टू टेक मी सम टाइम टू प्रोसेस एंड गिव यू अ प्रॉपर रिप्लाई। तो हाँ, Okay. दिस इज समथिंग आई हैव टू वर्क ऑन। बट सही है, काफी कोई सही नहीं. Now people have watched this on the stream, so they'll know okay. है। They have to give you 5 minutes to just. हाँ नहीं यार, बट अगर अगर कभी मिलते हो आईआरएल तो यार सब बताओ, और अगर दिशा ही स्ट्रीम देखने वाले हो तो प्लीज बताओ। Oh my God, yeah. मुझे हाँ, मुझे इन लोगों से मिलना है, मुझे क्विज वालों I से उतना ये know. नहीं है, I बट think they would हाँ be so chill. हाँ आई वांट टू मीट पीपल हु वॉच दिशा इन स्ट्रीम। इनकी ये Maybe we अलग could have फाइट a क्लब बन रहा है meetup in हमारा। Mumbai. हाँ Maybe we could have a meetup in Mumbai, but I don't think most people
I don't think people will. Yeah. हमने कोशिश की थी last year. वैभव जब आया था तो हमने रखा था meetup and a lot of people came. And by a lot of people, I mean 2 people. Okay. So So this is last year, no? हाँ वो भी है वो 100K पे करेंगे 100K पे करेंगे. Done. Yeah. ठीक है. Cools. I think yeah, this is this 11:20. Wow, this is officially Yeah. time for us to call it a night and day. And yeah, any closing thoughts, Disha? The floor is all yours. I just want to say, I think like I'm gonna take inspiration from all of our whatever we discussed today, and probably try to. No, yeah, I think I'm okay, but I'm going to ask you, ki, what are you so stressed about? This was not a closing thought. Ignore me. You do it. I'm not. I haven't. Okay. Yeah. हाँ वो मतलब ऐसे सोबर कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती वो उसके लिए थोड़ा अलग माहौल चाहिए होता है बट यहाँ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड जो भी ये स्ट्रीम देख रहे हैं एंड आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन अजीब लगी हो अजीब तो हम बातें करते ही हैं बट ज़्यादा मॉर्बिड ना लगी हो एंड आई होप वी हैवंट बीन इनसेंसिटिव टू एनीवन दैट वाज डेफिनेटली नॉट आवर इंटेंशन तो वो है एंड या मतलब the point was ki not that we make fun of death or anything is it was just ki we just wanted to have a conversation about handling death and your own death because that's something that all of us think about है ना तो वो है and I wish everyone all the very best for everything that you do in your life and I hope आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा जाए और आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाए सब कुछ अच्छा ही हो आपकी लाइफ में that is the bottom line एंड क्यों यार सही लोग हो यार आप लोग जो भी स्ट्रीम्स देखते हो संडे रात को हमारे साथ बैठ के तो सही लोग हो यार मतलब आप कुछ तो सही कर रहे हो लाइफ में है ना नॉट दैट कि आप ये स्ट्रीम देख रहे हो इसलिए सही कर रहे हो आप इन जनरल आप काफी कूल So लोग yeah, the fact that you think this conversation is worth listening. या इट्स वर्थ योर टाइम तो या सही सही लोग हो यार आप लोग तो एंड डोंट लेट एनीवन एल्स टेल यू कि आप सही लोग नहीं है ना सो cool तो I think that's a good note as in to end on दिशा आप बताओ आप क्या क्या कर रहे हो अभी चैनल पे Abhi, I am going to do. I'm very excited for the next video I'm doing. Going to be a vlog style type of a video. Nice. It's definitely going to be different from whatever I've filmed so far, but thoda time lagega aane mein. But I'm very excited for that. Nice. Other than that, I will be streaming on Wednesday. That is the 13th, if everything goes well. Yeah, that's all. Cool. तो सभी आ जाना चुपचाप नहीं काफी शोर में जाना आ जाना दिशा की स्ट्रीम पे एंड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग कंटेंट कमिंग अप दिस मंथ एंड काफी सारे गेस्ट एपिसोड्स अभी हो रहे हैं एडिट हो रहे हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं होजे पार्ट 2 कमिंग सून एंड या जस्ट बी हैप्पी और नॉट इट्स एंटायरली योर चॉइस एंड या चलो see you guys this was a great conversation